Hello friends, welcome back to my channel. Yesterday I had already recorded this video, but due to technical issue, now I have to record it again, and I'll try to cover all the topics as discussed with imaginations. But yeah, I must correct that today is 8th of August. So what is globe? Globe we have is the miniature of Earth. You must have known that Earth is in the jade form, not a spherical, and we cannot see earth at vast in practically. So we have taken a globe as a miniature to understand the physical and geographical features of the globe of the earth, sorry. Yes. So here we are going to understand our earth's different zones, like its eastern and western hemispheres, northern and southern hemispheres. Also, we will going to discuss about latitude and longitudes and how many are there in our imaginations, our imaginary lines. And also, we are going to see about the different degrees and its respective imaginary lines. And at last, we will see the zones covered at them. See, we have a horizontal and vertical imaginary lines to understand the globe, to understand any partic to locate any country. We have we have formed some imaginary lines of a globe, so that we can locate any country, or we can move to it toward its direction. So we have two types of lines, horizontal and vertical. We have the horizontal line, and it's commonly known by the name of latitude, and the vertical lines are known by the name that is here in red color, and known with the name of longitude. So please keep it remember, the latitudes are the horizontal lines and the longitudes are long t. Long means long length. So longitude is vertical line. So we have it 179 latitudes, and how? See, we have one is the equator. We have one as the equator line. First of all, we have one is the equator line, and we have 89 below the equator and above the equator lines. We have above the equator 89 lines, imaginary lines, and also below them, below to it. So we have total 179 latitudinal lines. Now next, you must be wondering that why it's not 90, 90 plus 90 and then 180. See, we have the equator, that is 1. That is the equator line. It's common in both the spheres, both the hemisphere, and that's why we have the 179 instead of 180. So we can keep it remember that total latitudinal lines are 179. This is something that we have mm, we had missed. Okay, that's not so important. Now we are going to see about the longitudinal lines. Longitudinal lines are the vertical lines that I have already told earlier, and they are 181 in total. And how they are 181? Because when if you we form if you see a lemon, then and cut it into like this, or then you can see that when we form a prime meridian line, then it's on not only just on the right side but also on the left side as well. So that's a thing. mm, okay, see it like this. I'm trying to build it like this, and it would have better if I see. सो अभी हमने देखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल में आखिर 189 लाइन्स कैसी होती हैं.
सॉरी 181 कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। सी हमारा जो जियोइड है हमारे इस तरह की है, और हम जब फॉर्म करते हैं तो इस तरह से हमारी फॉर्मेशन हो रही है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस है। तो इस तरह से काउंट करते करते एक लाइन हमारी ऐसी भी आती है, वो ऊपर से ये इस पॉइंट से लेकर वो नीचे तक एक आती है और एक इधर जाती है। तो इस तरह से इस लाइन पर जो हमने, आप एक संतरे को ले लो, तो संतरे की अगर जब हम फांक देखते हैं तो एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। तो इस तरह से हमारी कितनी हो जाती है, हमारी टोटल 181 हो जाता है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं लॉन्ग लैटिट्यूडिनल लाइंस की, तो अगर आप इस तरह से अगर आप कट करोगे ऑरेंज को भी, तो ऊपर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक कुछ भी नहीं मिलेगा, डॉट। आपको सिर्फ एक डॉट कहलाते हैं हम 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री इज नॉट अ लाइन बट इट्स जस्ट अ डॉट एट द 2 पॉइंट्स। सो दैट्स वाई, और हमने इसको सिर्फ मिलाया है टू गेट अ लाइन। सो दैट्स वाई देखिए इक्वेटर तो हमारी कॉमन में आ गई दोनों में, ऊपर भी हमारी 89 होती है, नीचे भी 89 एंड प्लस 1। सो दैट टोटल इज इक्वल टू 179, जो कि अगर ऑल टुगेदर अगर लाइन्स देखी जाए तो 360 ही बन जाती हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव आई हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पर हेमिस्फीयर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने स्फीयर को, हमने इसको हाफ जो हमने डिवाइड किया है, इसको हमने से हाफ जो हम डिवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द इक्वेटर, then it's divided into two parts. Above portion is known as the northern hemisphere and the below part is known as the southern hemisphere. Now, if I divide the same sphere vertically from the midline, that is commonly known by the name of prime meridian, international standard line as well. So it divides sphere into two halves. The left hemisphere is known by the name of western hemisphere, and the right hand side sphere is known by the name of eastern hemisphere. This is the eastern hemisphere and this is the western hemisphere. If I divide it like this, then this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. Now here we are going to see that कि हमारे zones कौन कौन से होते हैं। इसको तो फायदा ही नहीं हुआ, दोबारा स्लाइड ले लेते हैं। Now we have equator again. We know कि हमारा 0 डिग्री तो होता है। 0 के बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमारी इमेजिनरी लाइन आती है। उसके बाद आर्कटिक ऑफ सर्कल आते 6.5 पे, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आते 23.5 डिग्री पे। एंड दिस इज, अच्छा यहाँ पे कौन सी हमारी यूनिट लगेगी, सो दिस इज इन नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ, अगेन डिग्री नॉर्थ, एंड एट द नॉर्थ पोल इट इज labeled as 90 degree north. Similarly, at the south we labeled it as 90 degrees south. This is the equator line. Below the equator we have tropic of Capricorn. Below the Capricorn we have the Antarctic of circle. Now we are going to see the regions in it. We know that the level which is near to equator are too much hot, and that's why it's named as torrid zone.
and the region from Tropic of Cancer to the Arctic Circle, and from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle is the temperate zone, and at last we are going to see the frigid zone. So here the leftover portion, that is from the Arctic Circle, from the Arctic Circle to the North Pole, and from the Antarctic Circle to the South Pole is a region that is the frigid zone. Why frigid zone? Because uh, it's too much cold, colder, and ये पूरा का पूरा हमारा polar region होता है, हमारा बहुत ठंडा इलाका होता है, तो इसलिए हमारे इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं. अच्छा, हमारा एक चीज़ हमारी छूट गई है इसमें, जिसमें कि जीरो के बाद हमने देखा यहाँ पे, हमने नॉर्थ की हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक सर्कल की हमने ये देख चुके हैं कि किस डिग्री पे होते हैं. हमें ये लास्ट ये देखना है, ये भी 0 डिग्री पे है. ये हमारा किस डिग्री पे होगा? द सेम एज 23.5 साउथ, एंड दैट्स 66.5 साउथ डिग्री साउथ. तो बाकी सब कुछ हमारा कवर हो चुका है. इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, 1 डिग्री, 1 डिग्री से 1 डिग्री जो बताता है हमारा 111 किलोमीटर का डिस्टेंस बताता है. 1 डिग्री at the globe is equal to the 111 kilometer of the earth. So if it says that कि 179 डिग्री का हमारा जो पूरा लैटिट्यूड्स कवर होते हैं, तो 179 into 111, so you will get the total latitudinal kilometer answer. And if we will multiply 181 to the 111, then we will get the answer of longitudinal kilometer distance. And what we can see more is कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर पास होके जाता है. सो ऐसी 13 कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर पास होके जाता है. तो बी से हमारा स्टार्ट होती है नेम्स, एंड इट्स एंड विद 13th of countries. First is Brazil, Colombia, Ecuador, Democratic Republic of Congo, and सी डी ई एफ जी से हमारा गैबन, ई एफ ई तो चुका है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच से था कोई एच आई, आई से हमारा इंडोनेशिया, जे के केन्या, किरिबाती, एल एम से मालदीव्स, एन ओ पी, क्यू आर एस, आर से हमारा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एस से हमारा सोमालिया और साउथ टोम एंड प्रिंसिपल. दिस इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड जहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है. एस टी यू से युगांडा. आई गेस अब 13 तो हो गए होंगे. नाउ लेट्स काउंट दैट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So yes, we have 13 countries जहाँ से इक्वेटर की लाइन पास होकर जाती है.
uh, so that's all in today's video. Thank you so much. And have fun.